हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल ऑन इंडोपाठशाला। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बैटल्स एंड ट्रीटीज से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ एमसीक्यू क्वेश्चंस को। बैटल्स एंड ट्रीटीज बेसिकली एग्जाम में क्वेश्चंस काफ़ी इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, वॉर और जो आपकी संधियाँ यानी कि ट्रीटीज होती हैं। सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। इन विच एडी डिड द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन टेक प्लेस? तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1191 1191 एडी में बिटवीन मुहम्मद गोरी एंड पृथ्वीराज चौहान. दिस बैटल टुक प्लेस इन 1191 एडी and the result was Prithviraj Chauhan won this battle against Muhammad Gori. Okay, so let's see the second battle of Tarain, which took place in 1192 AD between Muhammad Gori and Prithviraj Chauhan. But the result was Muhammad Gori won this battle against Prithviraj Chauhan in 1192 AD, the second battle of Tarain. Okay, and Muhammad Gori killed Prithviraj Chauhan in the second battle of Tarain. Okay, and third battle of Tarain in 1216 AD. Many of you don't know the the third battle of Tarain. So here we will know about third battle of Tarain, which took place in 1216 AD, in which Mamluk king, or we can say slave dynasty का जो king था, Iltutmish, okay, Iltutmish and between Taj al-Din Yildiz. Okay, third battle of Tarain, which was happened in 1216 AD between Iltutmish and Taj al-Din Yildiz. Okay, so next question. When did the battle of Chandavar take place? चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 AD में. Okay, तो मोहम्मद गोरी एंड द किंग ऑफ कन्नौज जयचंद के बीच में ये 1194 AD में बैटल ऑफ चंदावर हुआ था, एंड द रिजल्ट वॉज मोहम्मद गोरी वॉन दिस बैटल अगेंस्ट द किंग ऑफ कन्नौज जयचंद. एंड ऑल्सो अ पॉइंट इज दैट जयचंद वॉज फादर इन लॉ ऑफ पृथ्वीराज चौहान. ओके, नेक्स्ट, द बैटल ऑफ खतौली वॉज फॉट इन. खतौली का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये 1517 में लड़ा गया था. बिटवीन होम? तो ये द बैटल ऑफ खतौली वॉज टुक प्लेस इन 1517 AD बिटवीन राणा सांगा, that who was the ruler of Mewar, and Ibrahim Lodi, the last ruler of Delhi Sultanate. Okay, तो राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में द बैटल ऑफ खतौली took place in 1517 AD, and Rana Sanga of Mewar imprisoned Ibrahim Lodi in the battle of Khatoli and released him after collecting some ransom. Okay, ransom लेने के बाद में इब्राहिम लोदी को फ्री किया था राणा सांगा ने. नेक्स्ट, when did the first battle of पानीपत take place? तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में हुआ था, एंड बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोदी. इब्राहिम लोदी वॉज मतलब एक तरीके का ऐसा एक रूलर था हु वॉज डाइड इन द बैटल फील्ड. ओके, एकमात्र ऐसा शासक था जो कि बैटल फील्ड में मारा गया था ऑफ दिल्ली सल्तनत. सो बैटल ऑफ पानीपत, ये 3 बैटल्स हुए थे. टोटल 3 बैटल्स ऑफ पानीपत वर हैपेंड. फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी इन 1526, एंड बाबर वॉन ऑल दिस. ओके, सॉरी, first battle of Panipat was Babur versus Ibrahim Lodi in 1526 AD, and second battle of Panipat, Akbar versus Hemu. But that time Akbar was very minor. Akbar बहुत छोटे थे. So Bairam Khan, his protector, we can say, तो Bairam Khan as a संरक्षक second battle of Panipat लड़ते हैं from the side of Akbar versus Hemu. Okay, तो 1556 में द बैटल ऑफ सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत वॉज टुक प्लेस इन 1556, एंड थर्ड बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस इन 1761 बिटवीन अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठा. ओके, सो नेक्स्ट, व्हेन डिड द बैटल ऑफ खानवा टेक प्लेस? खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में. द ट्रिक कर खाना खाया चला घाघरा बांध के. तो दिस ट्रिक इज, so the battle of Khanwa took place in 1527 AD between Babur and Rana Sanga, and the result was Babur won this war against Rana Sanga.
the Mewar ruler. Okay, next, which of the following is not correctly matched? निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर, बिकॉज द बैटल ऑफ चंदेरी टुक प्लेस between Babur and Medini Rai, not Sher Shah Suri. Okay, so Battle of Chanderi was happened between Babur and Medini Rai, and first Battle of Panipat to Babur and Ibrahim Lodi, which is correct. Next, Battle of Khanwa, Babur and Rana Sanga, which is also correct, and Battle of Ghagra, Babur and Afghani ruler. Okay, this ये सारे कुछ करेक्ट है, बट बैटल ऑफ चंदेरी बिटवीन बाबर एंड शेर शाह सूरी विच इज़ नॉट करेक्ट, सो सुमेलित नहीं है, नॉट करेक्टली मैच्ड, आपको बताना था, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर. सो लेट्स सी, हियर वी विल सी all 4 battles of Babur in 1526. The first battle of Panipat took place between the Mughal ruler Babur and the Ibrahim Lodi. Second, the Battle of Khanwa took place in 1527 AD between Babur and Rana Sanga, and Babur won this war. In 1528, Battle of Chanderi took place, और ये बाबर एंड मेदिनी राय के बीच में हुआ था. Next, the Battle of Ghagra took place in 1529 AD. In this battle, Babur defeated the Afghan rulers under the leadership of Muhammad Lodi. Okay, Afghanों की side से, from the side of Afghans, Muhammad Lodi was doing the job of leader, so Babur defeated him. Okay, we can remember all 4 battles through a trick. पानी पिया खाना खाया चला घाघरा बांध के. ओके, पानी पिया पानीपत, खाना खाया दैट वाज बैटल ऑफ खानवा, चला घाघरा बांध के, तो चला से बैटल ऑफ चंदेरी एंड घाघरा बांध के बैटल ऑफ घाघरा. ओके, नेक्स्ट, इन विच ईयर द बैटल ऑफ चौसा टुक प्लेस? तो चौसा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था 1539 में. तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर. और ये शेर खान और हुमायूं के बीच में हुआ था. ओके, बिटवीन शेर खान एंड हुमायूं. शेर खान won this war against Humayun and changed his name to Sher Shah Suri. Okay, so he gave a title to himself, Sher Shah Suri, and this battle was happened between Sher Khan and Humayun in 1539 AD. Next, when was the Battle of Kannauj fought? Kannauj, or we can say Battle of Bilgram. Okay, तो बैटल ऑफ बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 में बिटवीन शेर शाह सूरी एंड हुमायूं. ओके, एंड दिस बैटल वाज हैपेंड इन 1540 AD. तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर. व्हेन डिड द बैटल ऑफ तालीकोटा टेक प्लेस? तो तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1565 AD में बिटवीन बहमनी एम्पायर एंड विजयनगर एम्पायर. ओके, बहमनी एम्पायर एंड विजयनगर एम्पायर के बीच में बैटल ऑफ तालीकोटा टुक प्लेस इन 1565 AD. ओके, एंड द विजयनगर एम्पायर केम टू एन एंड इन दिस वॉर. तो आफ्टर दिस वॉर विजयनगर एम्पायर, जो कि हरिहर एंड बुक्का के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, तो विजयनगर एम्पायर केम टू एन एंड आफ्टर दिस वॉर. नेक्स्ट, व्हेन डिड द बैटल ऑफ हल्दी घाटी टेक प्लेस? तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? ये 1576 में हुआ था बिटवीन अकबर एंड महाराणा प्रताप. फ्रॉम द साइड ऑफ अकबर, मान सिंह ने पार्टिसिपेट किया था इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी अगेंस्ट महाराणा प्रताप, एंड अकबर वॉन दिस वॉर. ओके, बैटल ऑफ हल्दी घाटी टुक प्लेस इन 1576 AD. नेक्स्ट, When was the Battle of Plassey fought? तो प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? ये 1757 में लड़ा गया था. 23rd of June 1757 in a place called Plassey on the river bank of Bhagirathi. And in this war there was the army of the British East India Company and the other side the Nawab of Bengal. Okay, Nawab of Bengal Siraj-ud-Dawla. So from the company forces, Robert Clive defeated Nawab of Bengal Siraj-ud-Dawla. And the Battle of Plassey took place in 23rd of June 1757. Okay, and the Plassey place is where? तो भागीरथी नदी के तट पे है. नेक्स्ट, when was the Treaty of अलीनगर signed? तो अलीनगर की संधि कब हुई थी? ये हुई थी 1757 में. ओके, आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी 1757 में the Treaty of अलीनगर was concluded between Robert Clive and the Muhammad Siraj-ud-Dawla, the Nawab of Bengal. Okay, next, the Treaty of Purandar in 1665 was signed between Dash and the Chhatrapati Shivaji.
तो पुरंदर की संधि 1665 में छत्रपति शिवाजी और किसके बीच में हस्ताक्षर की गई थी? तो ये जयसिंह फर्स्ट फ्रॉम द साइड ऑफ औरंगजेब, जयसिंह फर्स्ट. ओके, सो पुरंदर फोर्ट विच इज इन पुणे, महाराष्ट्र. यू हैव टू कीप रिमेंबर दिस पॉइंट एज वेल. नेक्स्ट, Raja Jaisingh, okay? Raja Jaisingh was signed on behalf of the Mughal Emperor Aurangzeb, the Treaty of Purandar, which was happened between Raja Jaisingh and Shivaji, okay? So Raja Jaisingh was signed on behalf of the Mughal Emperor Aurangzeb, and Shivaji agreed to surrender 23 forts to the emperor, while the emperor recognized Shivaji's authority over 12 forts including Rajgarh and its revenue. Okay, तो राजगढ़ एंड उसका जो रेवेन्यू था वो शिवाजी को मिल गया, बट शिवाजी को 35 मतलब कि 23 आउट ऑफ 35 अपनी फोर्ट्स को देना पड़ा था, टू सरेंडर करना पड़ा था किसको? मुगल एम्परर औरंगजेब को. ओके, एंड शिवाजी ने प्रॉमिस भी किया कि मतलब इन सब के बाद वो अपनी शंभाजी मतलब जो उनके बेटे थे उनके सोन शंभाजी को भी भेज देंगे विथ सोल्जर्स. Next, if we talk about Shivaji, so Shivaji is the founder of Maratha Kingdom in India, and in 1674, okay, the coronation was happened of Shivaji in 1674, or we can say formally crowned as the Chhatrapati, or we can say monarch. Chhatrapati means monarch of his realm at Raigad. Where was happened the coronation of Shivaji? So at Raigad in 1674. नेक्स्ट, राजा जयसिंह कौन थे? हु वॉज राजा जयसिंह? तो राजा जयसिंह राजा मान सिंह के क्या थे? उत्तराधिकारी थे. ओके, एंड राजा जयसिंह जो मान सिंह के उत्तराधिकारी थे, तो मान सिंह वॉज द फेमस वन ऑफ द फेमस नवरत्न ऑफ एम्परर अकबर. वी ऑल नो दैट अकबर हैज़ नवरत्न. तो नवरत्न, फेमस नवरत्न वॉज राजा मान सिंह, बीरबल, मुल्ला दो प्याजा एंड ऑल दैट. तो राजा मान सिंह वॉज वन ऑफ देम. Next, the first Carnatic War was fought between the dash and the dash. प्रथम कर्नाटक युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? फ्रेंच एंड ब्रिटिश के बीच में लड़ा गया था. ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर. ये 1740 टू 1748 के टाइम ड्यूरेशन में चला था, एंड द फर्स्ट कर्नाटिक वॉर वॉज एंडेड इन 1748 व्हेन द ट्रीटी ऑफ एक्सला शैपेल वॉज साइंड. एंड ऑस्ट्रियन वॉर जो चल रहा था, ऑस्ट्रिया, द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया इज वियना. सो ऑस्ट्रियन वॉर एक चल रहा था, सक्सेशन वॉर. ओके, उत्तराधिकारी का युद्ध ऑस्ट्रिया में चल रहा था. तो इसको कंक्लूड करने के लिए, कंक्लूजन पर लाने के लिए ट्रीटी ऑफ एक्स ला शैपेल वॉज हैपेंड इन 1748 टू एंड द फर्स्ट कर्नाटिक वॉर विच वॉज गोइंग बिटवीन फ्रेंच एंड ब्रिटिश. नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, sorry, this is not the next question. So here we will see all three kinds of Carnatic War which were happened. So first Carnatic War was from 1740 to 48 between French and Britishers. Second Carnatic War 1749 to 1754, and third Carnatic War 1758 to 63. Okay, you have to remember all these things. I know this is not so easy to remember all these kinds of dates and years, so you have to listen this video at least 2 to 3 times. Okay, आपको ये 2 से 3 बार ये वीडियो को पूरी देखनी पड़ेगी. You have to listen this and kindly note down these kind of dates and years in your notebook. Okay, so next, on which bank of river the Battle of Saint Thom was fought between the French and Mahfuz Khan, commander of Anwaruddin, the Nawab of Carnatic? ओके, तो सेंट टॉम की लड़ाई कब और किसके बीच हुई थी? और जो अनवरुद्दीन कर्नाटक के नवाब के कमांडर जो थे महफूज खान, ये कहाँ पे, कौन सी नदी के तट पे हुई थी? ऑन विच रिवर बैंक? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अड्यार नदी के तट पे. ऑन द रिवर बैंक ऑफ अड्यार द बैटल ऑफ सेंट थोमे वॉज फॉट बिटवीन द फ्रेंच एंड महफूज खान, कमांडर ऑफ अनवरुद्दीन. ओके, the Nawab of Karnataka was Anwaruddin Khan. Okay, you have to remember this thing. So the first Carnatic War is remembered for the Battle of Saint Thome in Madras, and which was fought between the French forces and the forces of Anwaruddin. And Anwaruddin, we all know, Nawab of Karnataka. Okay, and French forces won against the Anwaruddin Khan in 1746. The first Battle of Carnatic is remembered for the Battle of Saint Thome War. नेक्स्ट, when was happened battle of Wandiwash? तो वांडीवाश का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1760 में between the French forces and the Britishers. So from the side of French, Comte de Lally,
and from the side of Britishers, Sir Eyre Coote, okay, Sir Eyre Coote and Comte de Lally, इन दोनों के बीच में Battle of Wandiwash took place in 1760. So you have to remember this thing. So Anglo-French struggle in southern India during the 7 years, जो सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था, 7 years war, तो 7 years war की टाइम ड्यूरेशन क्या है, 1756 to 63. तो ये जो वांडीवाश का युद्ध हुआ था, इट वॉज अ डिसाइसिव बैटल इन द एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल. जो एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल चल रहा था, सप्तवर्षीय युद्ध, 7 years वॉर, तो उसको एक डिसाइसिव बैटल, एक निर्णायक युद्ध था ये. कौन सा, विच वन, तो बैटल ऑफ वांडीवाश. नेक्स्ट, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉज हैपेंड बिटवीन, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, तो ये हुआ था, ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर, 1767 to 69. And at that time, governor was Lord Verlest and Hyder Ali, the father of Tipu Sultan. Okay, Hyder Ali wins against the Britishers in the Battle of First Anglo-Mysore War, which took place from the time of 1767 to 69 AD. Next, when was happened Treaty of Madras? मद्रास की ट्रीटी, मद्रास की संधि कब हुई थी, तो ये हुई थी 1769 में. ओके, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर. आफ्टर द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, दिस ट्रीटी वॉज हैपेंड इन 1769, द ट्रीटी ऑफ मद्रास. नेक्स्ट, इन विच ईयर वॉज द सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर फॉट बिटवीन द किंगडम ऑफ मैसूर एंड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. तो मैसूर साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था, तो ये 1780 to 84 में लड़ा गया था. And at that time, governor was Warren Hastings, and the second Anglo-Mysore War was fought between Hyder Ali, Nizam, Maratha, combined forces थी, and against British forces. Okay, so combined forces थी Hyder Ali, Nizam and Maratha against British forces, and Hyder Ali died in 1782 during the war of second Anglo-Mysore. Okay, Hyder Ali died in 1782. Then इसके बाद टीपू सुल्तान, during this war, his son टीपू सुल्तान succeeded him. Okay. Next, when was happened Treaty of Mangalore? तो मंगलोर की संधि कब हुई थी, ये हुई थी 1784 में, to end the second Anglo-Mysore War. Okay. टीपू सुल्तान did this in 1784. Okay. Next, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर वॉज फॉट बिटवीन, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था, ये 1790 to 92 AD में लड़ा गया था. ओके. नेक्स्ट देखिए, ब्रिटिश, मराठा एंड निज़ाम. ओके, तो ये कंबाइंड फोर्सेस थी अगेंस्ट टीपू सुल्तान. ओके, देन टीपू सुल्तान इसमें हार जाता है, तो ब्रिटिशर्स, मराठा एंड निज़ाम की कंबाइंड फोर्सेस होती है अगेंस्ट टीपू सुल्तान. एंड at the time of third Anglo-Mysore war, the governor was Lord Cornwallis. Okay, Lord Cornwallis. Next, when was happened Treaty of Srirangapattan? तो श्रीरंगपत्तन की संधि हुई थी 1792 में. ओके, तो ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपत्तनम साइंड बाय टीपू सुल्तान, द सन ऑफ हैदर अली, इन 1792 आफ्टर द वॉर ऑफ थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर. तो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के बाद में इन 1792 a treaty signed by Tipu Sultan for Srirangapatnam, and Srirangapatnam was the capital of Tipu Sultan. Next, fourth Anglo-Mysore War was happened when? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था, तो ये 1799 में लड़ा गया था. And Tipu Sultan died in 1799 while defending his capital named Srirangapatnam. And at that time, governor was Lord Wellesley. And also we know, after the battle of fourth Anglo-Mysore, the threat of French to Britishers also ended in 1799. Okay, and also we know a fact, Tipu died in 1799 while defending his capital named Srirangapatnam, and governor was Lord Wellesley. Next, when was happened battle of बक्सर? तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था, ये 1764 में हुआ था. एंड ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि कमांड की जा रही थी बाय हेक्टर मुनरो. ओके, हेक्टर मुनरो. एंड वी नो दैट इन द बैटल ऑफ प्लासी, तो लॉर्ड क्लाइव वॉज प्रेजेंट देयर, बट इन द बैटल ऑफ बक्सर हेक्टर मुनरो, ओके, कमांडेड बाय द दिस बैटल वॉज
हेक्टर मुनरो एंड द कंबाइंड आर्मी ऑफ द इंडियन स्टेट्स इंक्लूडिंग विच स्टेट, तो बंगाल एंड अवध. ओके, तो अवध का नवाब जो था शुजाउद्दौला एंड बंगाल एंड द मुगल एम्पायर. ओके, जो मुगल एम्पायर और बंगाल और अवध के जो नवाब थे, इनके अगेंस्ट थे कौन? हेक्टर मुनरो इन द बैटल ऑफ बक्सर. नेक्स्ट, बाय द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद ऑफ 1765, ओके, द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑब्टेन्ड. तो 1765 की इलाहाबाद की संधि के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने कौन सी जगह को प्राप्त किया था? तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर, दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड ओडिशा. सो the East India Company obtained the rights of दीवानी of बंगाल, बिहार एंड ओडिशा, इंडियन स्टेट्स के इनके दीवानी राइट्स इनको मिल गए थे. ओके, सो इसको हम कंक्लूड कर देते हैं. बैटल ऑफ प्लासी 23 ऑफ जून 1757 में एंड बैटल ऑफ बक्सर 22 अक्टूबर 1764. नेक्स्ट देखिए, ये जो 1765 में आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर इलाहाबाद की संधि हुई थी, द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद वाज हैपेंड. तो देयर वर 2 ट्रीटीज वर कंक्लूडेड बाय रॉबर्ट क्लाइव एट इलाहाबाद विथ नवाब शुजाउद्दौला एंड द एम्परर, मुगल एम्परर शाह आलम सेकेंड. ओके, अंडर द फर्स्ट ट्रीटी द नवाब ऑफ अवध शुजाउद्दौला हैव टू सरेंडर द इलाहाबाद एरिया एंड द कड़ा area. Okay, Allahabad and Kada were surrendered by the Nawab to the Mughal Emperor Shah Alam II. Okay, this was the first treaty concluded by Robert Clive, and the second treaty. Under the second treaty with Shah Alam II, the emperor was asked to reside at Allahabad. Okay, जो शाह आलम सेकेंड था एम्परर फ्रॉम द साइड ऑफ मुगल एम्परर, तो ये इसको रिसाइड करना था एट इलाहाबाद अंडर द कंपनीज प्रोटेक्शन. जो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रोटेक्शन में शाह आलम सेकेंड को इलाहाबाद में रहना था. एंड द दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड ओडिशा वेर ग्रांटेड टू द ईस्ट इंडिया कंपनी इंस्टेड ऑफ एन एनुअल पेमेंट ऑफ ₹26 लाख. ओके, तो बिहार, ओडिशा, बंगाल के दीवानी राइट्स कंपनी को मिल गए थे इंस्टेड ऑफ एनुअल पेमेंट ऑफ 26 लाख. नेक्स्ट, व्हेन वाज साइन ट्रीटी ऑफ सालबाई. सालबाई की संधि कब हुई थी? ये हुई थी 1782 में. एंड इसको मराठा एम्पायर और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लॉन्ग नेगोशिएशंस किए गए थे, तब जाके इसको सेटल डाउन किया गया था. ओके, एंड द ट्रीटी ऑफ सालबाई वाज आउटकम ऑफ फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर. ओके, and this was signed between Lord Warren Hastings and Mahadji Scindia. Okay, so you have to keep remember on 17th of May 1782 ये एंग्लो मराठा वॉर का एक आउटकम था ट्रीटी ऑफ सालबाई. ओके, नेक्स्ट, ट्रीटी ऑफ बसीन इन 1802 was signed between who among the following. तो 1802 में बेसिन की संधि होती है बाजीराव सेकेंड एंड ब्रिटिशर्स के बीच में. एंड वी नो नाना साहब वॉज द एडॉप्टेड सन ऑफ बाजीराव सेकेंड. ओके, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में आप इसको याद रख सकते हैं. यू कैन कीप रिमेंबर दिस पॉइंट. नाना साहब वॉज द एडॉप्टेड सन ऑफ बाजीराव सेकेंड. दत्तक पुत्र थे, गोद लिए हुए बेटे थे नाना साहब ऑफ बाजीराव सेकेंड. नेक्स्ट, द ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट वॉज साइन बिटवीन द इंग्लिश एंड द होम. तो राजपुर घाट की संधि हुई थी यशवंत राव होलकर एंड द ब्रिटिशर्स. सो द ट्रीटी 1805, तो राजपुर घाट की संधि हुई थी, वाज वन ऑफ द आउटकम्स ऑफ सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर. ओके, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर का एक आउटकम था ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट विच वॉज हैपेंड इन 1805. एंड दिस ट्रीटी मार्क द एंड ऑफ सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर. तो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर के होने के बाद आउटकम वॉज द ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट, एंड दिस वॉज साइंड बिटवीन द इंग्लिश और वी कैन से ब्रिटिशर्स एंड द यशवंत राव होलकर from the side of Maratha. Next, Pindari War, or we can say Third Anglo-Maratha War. Okay, तो Pindari War 1817 to 1818 is also known as, तो पिंडारी युद्ध को किस नाम से जानते हैं? तो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, अंग्रेजी और मराठा के बीच में जो हुआ था, इसको कहते हैं. सो नाउ दिस चार्ट विल गिव यू द कंक्लूजन. ओके, सो यू हैव टू कीप रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स which are written here. तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर
1775 to 1782, British East India Company and the Marathas, and the war begins as a result of Treaty of Surat. Okay, after the Treaty of Surat, the war begins between Britishers and Raghunath Rao from the side of Maratha, and this war was won by Maratha against the Britishers, and this treaty and this war, First Anglo-Maratha War, was ended by a treaty named Salbai, Treaty of Salbai, which took place in 1782. Okay, नेक्स्ट सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर ये हुआ था 1803 to 1805 में बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड मराठास. पेशवा ऑफ मराठा बाजीराव सेकंड साइंड अ सब्सिडरी अलायंस, जो सहायक संधि होती है, एंड वी नो लॉर्ड वेलेजली हैज स्टार्टेड दिस. सो द पेशवा ऑफ मराठा बाजीराव सेकंड विथ ब्रिटिशर्स signed a treaty named Bassein, Treaty of Bassein 1802, which resulted the second Anglo-Maratha War, which was won by Britishers. Okay, in the first Anglo-Maratha War, Raghunath Rao won this battle. Second, which was won by Britishers. Okay, Treaty of Bassein was happened during second Anglo-Maratha War in 1802. Third Anglo-Maratha War, 1817 to 1818. This is also known as Pindari War. Okay, so British East India Company और मराठा के बीच में होता है, and the war was won by British East India Company, and this third Anglo-Maratha War was ended with the Treaty of Mandsaur. Okay, Treaty of Mandsaur ended this third Anglo-Maratha War. Okay, so you have to listen this video for 2 to 3 times. I request you, and kindly keep the notes of this video. Okay, you have to write in your notebook. Next, Treaty of Sugauli was concluded in which of the following years? तो सुगौली की ट्रीटी कब हुई थी? तो ये हुई थी 1817 में. ओके, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर. 1816 में ट्रीटी ऑफ सुगौली was concluded, and as we all know, the McMahon line is between India and China, as well as the Red Cliff line is between India and Pakistan. So उसी तरीके से गंडक को, the Treaty of Sugauli defined Gandak as the international boundary between India and Nepal. Okay, so the Treaty of Sugauli was signed in 1816 was concluded between Britishers and Kingdom of Nepal. Okay, and the Treaty of Sugauli defined Gandak as the international boundary between India and Nepal. Next, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है. इंडिया एंड पाकिस्तान का वॉर होता है 3 टाइम्स, 1965, 1971 एंड 1999, जिसको कि कारगिल वॉर के नाम से भी जानते हैं. इंडिया और चाइना के बीच में होता है वॉर इन 1962. नेक्स्ट, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज हैपेंड बिटवीन द टाइम ऑफ 1914 to 1918. सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 to 1945 के बीच में होता है. नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ और वॉर्स हैं, बैटल्स हैं, यू हैव टू कीप रिमेंबर. ये एंशियंट टाइम के हैं. तो द बैटल ऑफ सिंध टुक प्लेस इन 712 AD, इन विच मोहम्मद कासिम established पावर ओवर द अरब्स. द बैटल ऑफ सिंध विच टुक प्लेस इन 712 AD, इन विच मोहम्मद बिन कासिम established his power. Next, battle of Kalinga. Okay, Kalinga, which took place in 261 BC. It was Ashoka, the son of Bindusara, okay, who invaded Kalinga in 261 BC. Okay, next, and we all know Kalinga, the part of Odisha. Okay, तो Battle of Kalinga 261 BC में होता है. Next, the Battle of Hydaspes took place between Sikandar and Alexander and King Porus of Punjab. तो ये होता है Battle of Hydaspes. तो ये सिकंदर और वी कैन से अलेक्जेंडर, किंग पोरस ऑफ पंजाब इन 326 BC. तो ये सिकंदर या अलेक्जेंडर वी कैन से वॉन दिस बैटल ऑफ हाइडेस्पीस अगेंस्ट द किंग ऑफ पंजाब पोरस के विरुद्ध ये लड़ाई सिकंदर जीत जाता है. नेक्स्ट, नाउ दिस क्वेश्चन इज फॉर यू. The first Carnatic War was fought between the dash and the dash. You have to give me the correct answer of this question in comment section. Thank you so much for watching this. Till then, take care. अपना खूब सारा ध्यान रखिए.